Our focus to developments that we are tracking from the national capital, where the crime branch of the Delhi police has arrested AAP MLA Naresh Balian in connection with a year-old extortion case and his alleged links with gangster couple Sangwan, also known as Nandu, who is currently based abroad. AAP MLA Balian was first detained by the crime branch unit of Delhi police for questioning and later then was arrested. This came hours after the BJP released an audio clip in which the AAP legislator from Uttam Nagar was purportedly heard instructing the gangster Nandu to threaten and extort ransom from a Delhi builder and other people. The Aam Aadmi Party defended Naresh Balian, claiming that this arrest was illegal, and the MLA had refuted the BJP's allegation, saying that he would lodge police cases against those who spread lies about him. Let's listen in to the details that are coming from the lawyer, the advocate of Naresh Balian, the AAP MLA, after his arrest. सर कंफर्म नहीं है ये एक साहब तो कह रहे हैं कि अरेस्ट कर लिया है, दूसरे पुलिस वाले कह रहे हैं जी अरेस्ट नहीं किया है। मैंने कहा है जी मुझे मिलवा दो या मुझे ये जानकारी दे दो कि स्टेटस क्या है, एफआईआर की कॉपी दे दो, कोई डिस्क्लोजर या कुछ ऐसा है वो बता दो। कुछ बताने को तैयार नहीं है ना एसएचओ साहब। मैंने कहा एसएचओ साहब से ही मिलवा दो या उनके सीनियर से मिलवा दो, एसीपी साहब डीसीपी साहब से मिलवा दो, उससे भी मिलवाने के लिए कुछ नहीं है। My colleague Arzu Seth joins me live on the broadcast. Arzu, very good morning. At this point of time, in fact, it is only seemingly trouble brewing for the Aam Aadmi Party. When we talk about Aam Aadmi Party MLA Naresh Balian, in fact, he seems to have been charged with the cases of extortion and now arrested with the Delhi's crime branch unit. What is this exactly, the entire case of extortion on the basis of which the crime branch unit of Delhi police has arrested him? Simran, AAP MLA Naresh Balian was arrested in Delhi yesterday in connection with an extortion case lodged last year. This is what the police had said, and also the MLA comes from the Uttam Nagar seat and was called to the Delhi Police Crime Branch office in RK Puram for questioning, and then later he was arrested by the Delhi Police Crime Branch. The development came after the BJP alleged the Naresh Balian was involved in the extortion activities and also questioned why AAP Chief Arvind Kejriwal has not taken action against him. Also, there was an audio clip that was revealed by the Bharatiya Janata Party in which there can be heard the voice recording regarding where the MLA and the gangster of Najafgarh. In the audio also there was the interaction regarding the taking money from the businessman and giving the details of the businessman, and hours after the leak of the audio clip, Naresh Balian was asked for the questioning and also being arrested by the Delhi Police Crime Branch. Also, if we talk about Aam Aadmi Party, they have defended the Naresh Balian, claiming that his arrest was illegal. The MLA had refuted the BJP's allegations and said that he would lodge police case against those who spread lies about him. Also, a police official said that the audio clip of the conversation, between the Naresh Balian and the gangster Kapil Sangwan, currently based abroad, had gone viral on social media, and also they have investigated it, and after that the arrest was being made. All right, Arzu, in fact, all details and inputs and developments on this case after AAP MLA Naresh Balian has been caught by the Delhi police based on the charges of extortion now will be tracked closely. Thank you for adding these details. Meanwhile, viewers, now it's time to shift our focus and get, in fact, more details about. There are political reactions coming in at this point of time on the arrest. Let's listen in. जब से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया है, गैंग वॉर, गैंग रेप, दिल्ली में व्यापारियों से अवैध वसूली, हत्याएं, इन घटनाओं का जिक्र जब से उन्होंने किया है कि देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, अमित शाह जी खुद अरविंद केजरीवाल के सिपाहियों को परेशान करने में लग गए हैं। अरविंद केजरीवाल के लोगों के खिलाफ साजिश रचने में लग गए हैं और इसी साजिश के तहत आज आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला क्या है?
जुलाई 2023 में खुद नरेश बाल्यान को धमकी मिलती है एक गैंगस्टर से जिसका नाम कपिल सांगवान है। फिर दोबारा धमकी मिलती है, मैं वो तारीखें पढ़ दे रहा हूं। पहली शिकायत नरेश बाल्यान करते हैं 3/7/2023 को, दूसरी करते हैं 5/7/2023 को, तीसरी करते हैं, तीसरी शिकायत इन्होंने पहले की है 19/12/2022 को, 20/12/2022 को, 20/12/2022 को। तो ये 5 शिकायतें वो पहले ही 2022 से लेकर 23 तक अपने साथ हो रही धमकी और गुंडागर्दी के बारे में वो खुद पुलिस में शिकायत करते हैं। उनका जो ऑडियो सामने आया है उससे स्पष्ट होता है कि वो गैंगस्टर्स के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। उत्तर नगर के जो प्रतिष्ठित लोग थे उनका नाम टिप्स रूप में देते थे और उनको धमका के पैसा वसूलने का काम करते थे। और ये ऑडियो पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया पर वायरल है और हमारी जानकारी के हिसाब से पुलिस ने शायद उन्हें डिटेन कर लिया, पूछताछ की जा रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। लेकिन ऐसे अपराधी जो जनता ने जिनको चुनकर भेजा लेकिन वो अपराध में लिप्त है, जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, कानून के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने जनता तो भगवान का रूप होती है, वो तो भगवान को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए।